Hello guys, good morning to everybody and let's start our session. Another awesome session on current affairs of science, tech, environment, eco and some parts of the geography mapping. So basically our main focus in these sessions is science and technology and environment and ecology. So let's crack UPSC CSE examination with India's largest learning platform, that is Unacademy. On Unacademy, like this is about me guys, you already know about me. On Unacademy you will get daily live classes and they are very important and very crucial for your pre as well as mains preparation. On Unacademy, particularly on Plus and Iconic platform, you will get structured courses, and these structured courses again help, mainly they help you to crack mains examination and interview. ओके सो बेसिकली होता क्या है कि जब आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेते हो प्लस ये आइकॉनिक का, तो उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि इट हेल्प्स यू टू क्रैक यूपीएससी, नॉट ओनली प्रीलिम्स. Live test and quiz is also being conducted on Unacademy. You are already experiencing the quiz of science, tech, environment, eco and geography mapping at 8 a.m. that I am conducting every day without fail. Everything that is happening on Unacademy is in recorded format. So what you get, you will get unlimited access to each and everything that is happening on Unacademy. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. Okay guys, very good morning to everybody, and please guys let me know, am I audible and visible to everybody? Am I audible and visible? प्लीज बता दीजिए ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं. ओके, so I'm already one of them. Then when you take a single subscription of UPSC CSE category, this single subscription gives you access to all subjects of general studies mains. It will give access to all subjects of general studies preliminary examination, including optional course as well as CSAT paper. Fine. An iconic subscription of 12 months of Unacademy with SKUS code and 10% discount, it will cost you 57,600. One very important thing guys, the price, there is a proposed price hike at 20 October. ठीक है, तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू शुड टेक इट बाय 19 October और बिफोर 19 October. ओके, क्लियर गाइज? So in case of iconic subscription, you are getting a personal mentor, and this personal mentor will ensure that you are studying regularly. There are detailed study plans that will be decided by discussion with you. एंड प्लस आइकॉनिक में आपके आंसर राइटिंग भी होती है, मतलब अगर आप आंसर लिख रहे हो तो दीज आंसर्स विल बी चेक्ड ऑन आइकॉनिक प्लेटफॉर्म. क्लियर? अ 24 month आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विद SKUS कोड विल गिव यू 10% डिस्काउंट एंड इट विल कॉस्ट यू 89,100 rupees. A plus subscription of 12 month, right now it is 44,000 rupees, but it is increasing. I guess it will become 49,000 rupees for 12 month. So without discount you will pay 44,000 rupees till 19th October or 20 October, and if you apply this code SKUS, it will give you 10% discount and you are paying only 39,600 for 12 month plus subscription. And a 24 month plus subscription, instead of 64,000 rupees, it will cost you 57,600 till 20 October. After that the price will rise and SKUS code will give you 10% discount. Done? Clear? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. इसमें हम ये वाले करंट अफेयर पूरे आज इस स्लाइड में जितने भी वो खत्म कर देते हैं. हमने फ्लड फोरकास्टिंग की बात की थी, डॉपलर की बात की थी, एनसेम्बल एंड ऑल 5G की बात हो गई हमारी. वी डिस्कस्ड अबाउट IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, and as well as I guess we discussed about artificial intelligence. मैंने artificial intelligence और इसमें गुड मॉर्निंग, आज इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया मेरा ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ने में कि मैं आपकी क्लास का बहुत ईगरली वेट करती हूँ. ओके नेहा, थैंक यू वेरी मच. इट्स ओके नेहा, आई अंडरस्टैंड दैट. Okay, now we are going to discuss about the fatal attraction. So one by one in this article, in the Hindu, we mainly discussed about carnivorous plants. We are discussing about carnivorous plants. Okay guys,
क्लियर? सो अब इस फैटल अट्रैक्शन में क्या है ना कि सी वन बाय वन आपको याद रखना है फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. आई थिंक आई ऑलरेडी टोल्ड यू द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस आर्टिकल. देयर इज अ इंक्रीजिंग कम्युनिटी ऑफ द पीपल हु आर taking carnivorous plant as their pets. करेक्ट? करेक्ट. सो क्यों, वो अलग बात है, लेकिन अभी हमें कार्निवोरस प्लांट के बारे में जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हमें पता होना चाहिए. सो फर्स्ट थिंग, दे थ्राइव इन लेस फर्टाइल एंड मार्शी लैंड्स. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. कार्निवोरस प्लांट्स दे थ्राइव इन लेस फर्टाइल and they thrive in marshy areas or marshy land. याद रहेगा? Isn't it unique, guys? Like most of the plants, they will grow in a fertile land or fertile soil. but यहाँ पे उल्टा ही है. आपका ये जो carnivorous plant है, they need less fertile land. They need a land which lacks nutrients. This is very unique about them. Okay, so carnivorous plants have adapted themselves to gain nutrients by capturing and digesting their prey. So if they are growing in a less fertile land, if they are growing in a marshy land, then from where they get their nutrients? These plants get their nutrients from the insects they are eating. यहाँ पे उन्हीं के लिए उन्होंने टर्म यूज की है prey. So इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है? कार्निवोरस प्लांट ग्रो इन अ लेस फर्टाइल एंड मार्शी लैंड्स एंड कार्निवोरस प्लांट gain their nutrients by capturing and digesting their prey or the insect. Clear? We are going to the next slide now. They gave different names of the plants. For example, pitcher plant, इसमें pitfall traps होते हैं, and as well as there is sundew. There is another plant जिसका नाम है sundews, जिसमें beads of sticky glue होते हैं. It is not at all important for you. For you, what is more important? You need to remember that pitcher plant is a carnivorous plant. Okay, this you need to remember. Then another thing that you need to remember is sundew. Sundew is an example of carnivorous plant. Then another thing, Venus flytrap. It has hinged leaves like tiny jaws that snap shut around its prey. The third carnivorous plant is Venus flytrap. Okay, so now you know the three carnivorous plants. One is pitcher plant, another is sundew, and another is Venus flytrap, and the last one that is mentioned in this article is bladderworts. Bladderwort is the carnivorous plant which is primarily aquatic. It is again important for your preliminary examination. Bladderwort is a aquatic carnivorous plant. याद रहेगा? Bladderwort is a aquatic carnivorous plant, guys. Please remember this. Fine. And they have underwater traps and use a vacuum action to suck insects into the trap. Not much important. So from this slide, just you need to remember the names of the carnivorous plant. The first plant is pitcher plant, another is sundew, another is Venus flytrap, and another is bladderworts. These are the four carnivorous plants that you will find or that are mentioned in this article of the Hindu. We are going to the next slide, guys, and next slide अब आता है आपका pitcher plant. One important thing that you need to remember here is pitcher plant is one of the most common carnivorous plant in India. आपको इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन प्लांट कौन सा मिलेगा कार्निवोरस? It is pitcher plant. Now we will go through the some details of pitcher plant. Not at all important for your exam, but as a part of the information we should know them. Yes, it is a carnivorous plant, and pitcher plants have many species. मतलब there is not a single species. There are many species of pitcher plant which are carnivorous. उसमें से एक species इंडिया में आपको मिल जाएगी. Okay, they have modified leaves known as pitfall traps. So traps of the pitcher plant which are known as pitfall traps. Okay, traps of the pitcher plant which are known as pitfall traps, they are nothing but modified leaves. You need to remember this, modified leaves. What are the pitfall traps present in the pitcher plant? These are the modified leaves. Okay, guys. Clear?
याद रहेगा पीचर प्लांट में जो ट्रैप्स है वो क्या है, मॉडिफाइड लीव्स है। एंड यू नो व्हाट, दीज लीव्स दे आर लाइक बाउल। आपको पता है इनको क्या कहा जाता है, मंकी ग्लास भी कहा जाता है। इन केस ऑफ इंडिया वी कॉल दीज प्लांट्स मंकी ग्लासेस, बिकॉज मंकीज क्या करते हैं, इसके जो लीव्स है ना, इनमें जो वाटर रह जाता है उस वाटर को ड्रिंक करते हैं। तो दीज पिटफॉल ट्रैप्स दे आर फील्ड विथ डाइजेस्टिव लिक्विड। These pitfall traps, they are filled with digestive liquid. Very good morning, Himanshu. So from this slide, what you need to remember that the pitfall traps that are present in the peacher plant, these are nothing but the modified leaves, and these modified leaves are filled with digestive liquid. These modified leaves are filled with digestive liquid. So basically, when some insect falls into this peacher plant's pitfall trap, that is digested by this digestive liquid. अब आप यहाँ पे देखिए, फाइन, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज द पिक्चर प्लांट एंड दीज आर द पिटफॉल ट्रैप्स। These are the pitfall traps. You can see these pitfall traps are like glass only. अब इनमें क्या होगा, जब heavy rainfall होगा तो water will be there ना, इसमें water रहेगा और ये water monkeys drink करते हैं इंडिया में। सो इन्हें हम क्या कहते हैं, monkey glass भी कहा जाता है। इन pitcher plants को क्या कहा जाता है, monkey ग्लासेस भी कहा जाता है। अब ये जो पिटफॉल ट्रैप्स है, इनके अंदर आपको स्टिकी डाइजेस्टिव लिक्विड मिलेगा एंड दिस डाइजेस्टिव लिक्विड, नमस्ते धनलक्ष्मी, दिस डाइजेस्टिव लिक्विड इज यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ द इंसेक्ट्स दैट आर ट्रैप्ड इनटू दिस पिटफॉल ट्रैप। क्लियर? So this is about the peacher plant. We are going to the next slide now. Venus flytrap. Okay, one by one. They are native to subtropical wetlands. Can anybody tell me which region in India can be called as subtropical? Which region in India we can call as subtropical? Okay. Now Venus flytrap, they are native to subtropical wetlands on the east coast of USA, in North Carolina and South Carolina. So basically Venus flytrap, these are the endemic plants. These are the endemic plants of USA or in USA. These are endemic in USA. Okay guys, clear? Yes, obviously Himanshu, it will have chemical composition that will help them to digest the chitin present in the insect, और whole insect body digest करने में help करेगा, chemicals तो होंगे ही उसमें, ठीक है। So अगर आपको पूछा जाए Venus, it is not at all important guys, but हम जा रहे हैं तो एक एक बात समझ रहे हैं। Venus flytrap, they are endemic to USA. These are the carnivorous plants. अभी Venus flytraps जो है ना, ये Venus flytrap देखिए इस तरह से होते हैं। जब ये जो है ना, यहाँ पे जब इंसेक्ट आ जाता है तो इसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उन हेयर की वजह से उन्हें सेंसिटिविटी आती है एंड दे विल जस्ट क्लोज स्नैपशट द लीव्स। जैसे ही वो लीव्स स्नैपशट हो जाते हैं, दिस insect will be caught into these leaves and it will be digested by this Venus flytrap. Isn't it interesting? Nature is so beautiful. So now you know what is peacher plant and how it digests or how it captures the insect. Now you know what is Venus flytrap and how exactly it digests or basically it captures the insect. Okay? Yes, Prince Yadav. Normally जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है ना, गुजरात राजस्थान के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, उसे हम सब ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। क्लियर? देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, ब्लैडर वर्ड्स। ओके, दीज ब्लैडर वर्ड्स, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज यूनिक और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैडर वर्ड, sundews, पीचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप? मतलब एक साइड में आप पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप एंड सनड्यू रखोगे और एक साइड में आप ब्लैडर वर्ड रखोगे, तो ये तीनों जो है ना टेरेस्ट्रियल कार्निवोरस प्लांट्स है एंड जो ब्लैडर वर्ड्स है दीज आर एक्वेटिक कार्निवोरस प्लांट। ओके, डिटेल ये जो है ना आपको लेंटिब्यूलेरेसी फैमिली, लैमिलेज, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, यस it is very important. Okay, bladder words can be found in lakes.
दे आर एक्वेटिक। सर पीडीएफ शेयर कर दे आज, कंप्लीट प्लीज सर, संडे है कल रिवाइज करना है पूरा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पीडीएफ आज शेयर हो जाएगी, डोंट वरी हिमांशु। ओके, देन ब्लैडर वर्ड्स कैन बी फाउंड इन स्ट्रीम्स, एक्वेटिक है, यस कपिल करेक्ट, दे आर एक्वेटिक। ब्लैडर वर्ड्स कैन बी फाउंड इन waterlogged soils, as already we discussed that these carnivorous plants can be found in less fertile land और मार्शी लैंड। सो ब्लैडर वर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? वाटर लॉक्ड एरियाज में मिल जाएंगे। वेरी गुड। देखिए ये एक छोटी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट ब्लैडर वर्ड इज अ एक्वेटिक कार्निवोरस प्लांट, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड जिन्होंने मेरा सेशन अटेंड नहीं किया, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर। आप आंसर कर पा रहे हो, और अगर लकीली यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्वेटिक कार्निवोरस प्लांट, यू कैन इजीली आंसर, अदर्स विल नॉट बी एबल टू आंसर। ये मिसेलेनियस में आता है, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन के सब लोग आंसर कर पाएंगे, लेकिन ये हर कोई आंसर नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही आंसर कर पाओगे। ओके क्लियर? Remember, they are invasive. Bladder words, they are invasive species. Can anybody tell me a name of a invasive species or aquatic invasive species that can be found in India? Aquatic invasive species. Okay. ये एक क्वेश्चन हुआ आपका। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रहा हूं, उसका भी आपको आंसर देना है। What are the two characteristics that make a particular species invasive? What are the two characteristics that make any particular species an invasive species? ये आप लोगों को बताना है। तो गाइस एक्वेटिक इन्वेजिव स्पीसीज है ना, वो है आपकी वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ, इसे क्या कहते हैं बंगाल का, बताइए? वाटर हायासिंथ इज ऑल्सो नोन एज डैश डैश ऑफ बंगाल। प्लीज टेल मी दोज पीपल हु आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेरी गुड, तनुजा, सुब्रता, अंजू, रमनदीप, कपिल, यू वेर ऑल्सो करेक्ट। वाई यू डिलीटेड दैट? वाटर हायासिंथ के साथ दैट इज ऑल्सो, जो आपने लिखा था वो भी इन्वेजिव स्पीसीज है। फिर से लिखिए, बच्चों को पता चलना चाहिए। प्लीज कपिल राइट इट डाउन अगेन। नो नो, स्प्रेडिंग नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं। और आपके बंगाल वाले फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड क्लिक नहीं हो रहा है, इसलिए आई एम आस्किंग यू गाइस। चलो बंगाल प्लीज कम टू हेल्प। टेरर ऑफ बंगाल, वेरी गुड तनुजा बहल, थैंक यू वेरी मच। वाटर हायासिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज बंगाल में क्या है ना, मेनली आपको बहुत सारे रिवर, स्ट्रीम्स और रिवलेट्स मिल जाएंगे। बकवीट इज अ इन्वेजिव स्पीसीज। थैंक यू कपिल। ठीक है, सो अब आपको तीन इन्वेजिव स्पीसीज पता चल गई। ब्लैडर वर्ट इज अ इन्वेजिव स्पीसीज, वाटर हायासिंथ इज अ इन्वेजिव स्पीसीज, एंड दी what you can say buckwheat is an invasive species. Now I asked you the two characteristics of the invasive species. So those two characteristics are, number one, they are non-native. Invasive species आप उसी species को कह सकते हैं which is non-native, and second, सर ये सीक्रेट चैट कहाँ पर होता है? आई डोंट नो मुकुल राठौड़। एंड द सेकेंड जो है ना, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, दे स्प्रेड इनॉर्मसली, और दे स्प्रेड इन अ वे कि दे डू नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ नेटिव स्पीसीज। They spread enormously. So these are the two characteristics of invasive species. So both will apply to bladder wort because it is invasive species. Clear? We are going to the next slide. This is how a bladder wort looks like. ये रहे ना, these are the traps that are present underwater in this bladder wort. ये जो आपको दिख रहे, these are the traps. देखिए नेचर ने क्या क्या बना रखा है, और हम सिंपल सा आईएएस नहीं बन सकते। गुड मॉर्निंग हनी शर्मा। नेचर ने इतनी यूनिक चीजें बना के रखी है, और हमें बनना क्या है, सिर्फ एक आईएएस बनना है। बिकॉज अंजू देवी, ये वाटर हायासिंथ इन्वेजिव स्पीसीज है। व्हेन इट ग्रोज इनटू द वाटर बॉडीज इन रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स इन बंगाल, सो इट किल्स एवरीथिंग एल्स। ओके, वो सब चीजें किल कर देती है। बाकी मतलब आपके वहां पे फिश ग्रो नहीं हो सकती, तो इसलिए उसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। बंगाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चले। हो गया इन्वेजिव स्पीसीज वाला कंसेप्ट सभी का क्लियर?
अब हम जाते हैं आगे. It's called terror of Bengal because it grows in an alarming rate. Okay, Himanshu, correct. So this is about the bladderwort. Now carnivorous plant. As I already told you, in India is home only one Nepenthes species, Nepenthes khasiana. Can anybody tell me this Nepenthes khasiana can be found in which part of India? Geographically, in which part of India we can find this only carnivorous plant in India, and it is a species of peacher plant. ये peacher plants में आता है. Okay, so name, इसके नाम से ही आप guess कर सकते हो कि ये कहाँ मिलता है. Nepenthes khasiana. I will not answer. Let's see how you use your logic. देखते हैं आप कैसे लॉजिक यूज करते हो. They absorb all nutrition of water and leads to killing aquatic species. Yes, Tanuja Behel, that's why we call them terror of Bengal, particularly water hyacinth. Okay, no, it is not in Arunachal Pradesh. Khasiana, Khasi Ana नहीं, Khasiana. It is Garo Khasi Jantia Hills, मेघालय. वेरी गुड अनुपम अधिकारी. इट इज इन मेघालय, खासी हिल्स में मिलता है. ये नेटिव टू खासी हिल्स है. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस खासियाना. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो इट इज द ओनली one Nepenthes species, that is Nepenthes khasiana, which is endangered. Okay, another fact that you need to remember about prelim, the first fact that you need to remember about prelims is there is only one peacher plant or carnivorous plant species is native to India. The name is Nepenthes khasiana and we can find this species in Meghalaya. This is one. Second thing that you need to remember is 99% carnivorous plants fall into endangered category. याद रहेगा, 99% plant species they fall, carnivorous plant fall into endangered category. Can anybody tell me how many categories there are of IUCN red list? IUCN के रेड लिस्ट की कैटेगरीज के नाम बताइए मुझे. कितनी है ये बताइए, नाम मत बताइए. 9 कैटेगरीज बताइए. कौन कि, अरे यार मैंने ही बता दिया. टोटल 9 कैटेगरीज है. अब आप नाम बताओगे. देयर आर टोटल 9 कैटेगरीज. अब आप नाम बताओगे. Can we use these plants as herbicide? How we can use them? We can use them as insecticide. Anshu Devi, bioinsecticide. Yes, we can. 9 categories. Number 1, extinct. Number 2, extinct in the wild. Number 3, critically endangered. Number 4, endangered. Number 5, vulnerable. Number 6, threatened और near threatened कहा जाता है शायद, near threatened. ओके, नंबर 7, 8 and 9. ये 3 नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे, आप बता सकते हो. वल्नरेबल के बाद नियर थ्रेटन्ड के बाद 7, 8, 9, ये 3 कैटेगरीज आप लोग बताइए. मैंने 6 बता दिया आपको. टोटल 9 कैटेगरीज है IUCN की. तो ऑल नियरली 99% कार्निवोरस प्लांट दे फॉल अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी. दे विल बी आइदर इन दिस कैटेगरी और इन दिस और वल्नरेबल. इन तीनों में से एक में आएंगे. मोस्ट ऑफ द कार्निवोरस प्लांट विल फॉल इनटू एंडेंजर्ड कैटेगरी. ई वाली कैटेगरी में ये फॉल करते हैं. ओके, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड. थैंक यू. लीस्ट कंसर्न 7th में आएगा. लीस्ट कंसर्न एंड 8th में आएगा. नहीं, डाटा डिफिशिएंट से पहले और एक आएगा और लास्ट में डाटा डेफिशिएंट आएगा. 9th वाला डाटा डेफिशिएंट आएगा. और एक 8th कैटेगरी रह गई हमारी. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. extinct in wild, critically endangered, vulnerable, near threatened, least concern and data deficient. 8 ही तो हो गए ना. टोटल 9 कैटेगरीज है. चलिए आप लोग देख लीजिए, एक रह गया है. तो ये जो 9 कैटेगरीज है इसमें से all the carnivorous plant they fall in endangered category. Kapil, vermin is in Wildlife Protection Act 1972. It has nothing to do with the IUCN red list. Threatened maybe Brahmandeep.
चलिए we are going to the next slide. So Nepenthes khasiana, named after the Khasi Hills, to which it is largely endemic. Remember, Nepenthes khasiana is okay. Very good. Thank you, Subrata Burai. Eighth category is not evaluated. चलिए मैं एक बार आपको ये पूरे 9 कैटेगरीज के नाम बता देता हूँ. वेरी सिंपल है याद रखने के लिए. दो मुझे लास्ट 3 याद नहीं थे. नंबर 1 एक्सटिंक्ट, नंबर 2 एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. मैंने बोला था ना आपको मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा, कुछ नहीं भूलने दूंगा. नंबर 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नंबर 4 एंडेंजर्ड, नंबर 5 वल्नरेबल, ओके, नंबर 6 नियर थ्रेटन्ड, नंबर 7 least concern, number 8 not evaluated, and number 9 data deficient. These are the 9 categories under IUCN Red List. इसमें से ये जो 3 दिख रही है ना आपको, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, इन 3 को हम कहते हैं थ्रेटन्ड कैटेगरीज. इन 3 को हम क्या कहते हैं? थ्रेटन्ड कैटेगरीज. ओके, क्लियर? यस, वेरी गुड गाइस, आप टैलेंटेड हो यार. सो दिस Nepenthes khasiana, native to Khasi Hills, it is a peach plant of tropical area. It is an endangered tropical peach plant of genus Nepenthes. It is only Nepenthes species native to India, and ये अट्रैक्ट करती है प्रे को थ्रू ब्लू फ्लोरेसेंस, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर. फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लावर. और ये ब्लू फ्लावर्स की वजह से प्रे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. दिस इज सन ड्यू, दिस इज सन ड्यू. ओके, ये एक दिखाना बाकी था आपको. यू कैन सी द जेली लाइक ड्रॉप्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लांट. और जब कोई इंसेक्ट इन पे फॉल होता है ना, तो ये जेली लाइक और स्टिकी होता है, इसलिए वो इंसेक्ट यहाँ से निकल नहीं सकता. सो दिस इज ऑल अबाउट द फैटल अट्रैक्शन कार्निवोरस प्लांट के बारे में. यू ऑलरेडी नो what exactly these carnivorous plant require. Number 1, they require good sunlight. This you already know. What these carnivorous plant require? They require good sunlight. Okay, can anybody tell me what are the 2 requirements that we discussed for carnivorous plant or about carnivorous plant? चलिए बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए वो 2 रिक्वायरमेंट. और एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैंने आपको बता दी. व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट? दैट रिक्वायरमेंट इज गुड सनलाइट. ओके, गुड सनलाइट. अनदर इज सॉइल शुड बी न्यूट्रिएंट फ्री. इट इज वेरी यूनिक. सॉइल शुड बी न्यूट्रिएंट फ्री and they can also grow in marshy areas. They can also grow in marshy areas. Okay, we are going to the next slide. Normally होता क्या है? फीमेल प्लांट्स आर फ्यू व्हेन कंपेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट. सो यहाँ पे भी पुअर सेक्स रेशियो है. ऐसा लगता है दे बिलोंग टू हरियाणा और पंजाब. ये जो आपके पीचर प्लांट्स है या कार्निवोरस प्लांट है, इनमें फीमेल प्लांट्स की पॉपुलेशन बहुत कम होती है कंपेयर टू मेल प्लांट्स. मेल प्लांट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि these plants they are not dioecious. These plants have different sex on different plants like animal. Normally plants में क्या होता है? एक ही फ्लावर में आपको दोनों सेक्स मिलेंगे, मेल एज वेल एज फीमेल. ये दोनों सेक्स आपको एक ही प्लांट में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग है. यहाँ पे आपको दोनों के दोनों कहाँ मिलते हैं? मतलब एक फीमेल प्लांट अलग है और मेल प्लांट अलग होता है. ठीक है, सो दिस इज इट. And then this is all about the carnivorous plant, I guess. That's it. Now we are coming to the Nobel Prize in Chemistry. Please tell me, Nobel Prize in Physiology or Medicine is given for the discovery of what? Nobel Prize in Physics is given for the discovery of what? And Nobel Prize in Chemistry is given for the discovery of what? It is written in front of you. Chemistry वाला Nobel Prize आपके सामने लिखा हुआ है. Please answer. Yes, Anu Kumari, they are monoecious. Thank you. Very good, Anupama Adhikari.
Physiology or medicine Nobel Prize is given for discovery of hepatitis C virus. Fine. What about Nobel Prize in Physics? Nobel Prize in Physics is given for the discovery of black hole. Very good. And the Nobel Prize in Chemistry is given for the discovery of CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 ये जो जीन एडिटिंग टूल है, CRISPR-Cas9 tool to edit the DNA with precision. फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस दो फीमेल को ये नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला हुआ है. 2 फीमेल गॉट दिस नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. वेरी गुड. देखिए अब ये जो आप लोगों ने आंसर किए ना, ये शो करता है कि आपका स्टडी बहुत अच्छा हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. इट इज़ नॉट ईजी गाइज, इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ Public Service Commission, preparing for Public Service Commission, to answer such detailed questions of science and technology. You are answering them, and you already know कि the percentage of questions from science and technology is very high in preliminary examination. We are going to the next. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? Molecular seizures भी कहते हैं. Can anybody tell me the name of the enzyme which is known as molecular seizure? ये हमने डिस्कस किया था. नेम ऑफ एंजाइम which are used as molecular seizure. The names of these enzymes are mentioned in NCERT biotechnology chapter. साइंस NCERT बायोलॉजी की जो है ना, उनमें मेंशन है. चलिए, आई एम वेटिंग गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. यस, क्विकली बता दीजिए. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. वेरी गुड अंजू देवी, थैंक यू वेरी मच. सो उनका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप के हैं. नो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तनुजा. ओके, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप के हैं. 2 टाइप के, एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस, ओके, एंड अनदर इज एक्सोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस डीएनए के इनर पार्ट्स को कट करते हैं, और एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एक्सटर्नल पार्ट्स को कट करते हैं. सो दिस इज द CRISPR-Cas9 टूल. ओके, उसे भी हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को भी मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है. दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और rDNA टेक्नोलॉजी. इट इज ऑल्सो one of the tools for genetic engineering like CRISPR-Cas9. As I already told you, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा. जो भी पुरानी चीजें ना, आपको मैं बिल्कुल भूलने नहीं दूंगा. आप नहीं भूल रहे हो. We are going ahead. Okay, molecular seizure. Now, 6th and 7th woman to receive Nobel Prize in Chemistry. जैसे Nobel Prize in Physics में भी एक फीमेल थी. अब तक फिजिक्स का नोबेल कितने फीमेल को मिला है? 4 फीमेल्स को मिला हुआ है बाय 2020. ओके, इन द सेम वे केमिस्ट्री का नोबेल है ना, अब तक कितने फीमेल्स को मिला है? 7 फीमेल्स अप टू 2020 इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है. ठीक है, यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो देयर इज अ जेंडर गैप. ओके, देयर वाज वन क्वेश्चन, मैं मेंस के लिए आपको बता दूं, ये यूपीएससी में आई थिंक ऐसे आया था. ठीक है, एक ऐसे आया था. तो वो ऐसे ये था कि व्हाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स इज लेस इन साइंटिफिक कम्युनिटी when it comes to research or scientific research, why the number of female is lesser. इस तरह का एक क्वेश्चन या ऐसे आया था. तो इफ पॉसिबल प्लीज राइट इट डाउन. मैंने आपको बता दिया है. रीजन बताइए कि फीमेल के नंबर्स कम क्यों हैं साइंटिफिक रिसर्च में, या एज ए साइंटिस्ट फीमेल कम क्यों है. ठीक है, चलिए आगे. सो नाउ यू हैव टू लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. नंबर 1, ये जो 2 फीमेल्स है, चारपेंटियर एंड डाउडना, देखिए 51 और 56 का एज है बस इनका. when they were working on a common harmful bacteria, okay, and Miss Charpentier came across a previously unknown molecule which was part of bacteria's ancient immune system. So first this female was working on the bacteria. She came across a molecule. That molecule is part of the ancient immune system. Ancient
system of bacteria, and this the molecule which is part of the molecule which is part of the ancient immune system. What that molecule was doing? That molecule was disarming viruses by snipping off parts of their DNA. Wow, वाह, मतलब सीधे उस बैक्टीरिया के हाथ में एक तलवार थी। जैसे ही वायरस सामने आ गया, वो क्या करता था? तलवार से उस वायरस के डीएनए को काट देता था। वो है ना बाहुबली में, क्या डायलॉग है बाहुबली का, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। जो 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 हाथ औरत के जिस्म को हाथ लगाते हैं, उन हाथों को पकड़ना नहीं समथिंग, या काट देना चाहिए। क्या नाम होता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। देवसेना, हाँ देवसेना, उन हाथों को काट देना चाहिए और सीधा मार देता है। उसी तरह इस बैक्टीरिया की ये जो एनिशियंट इम्यून सिस्टम है, इस एनिशियंट इम्यून सिस्टम में एक अननोन मॉलिक्यूल मिला। किसे? इस फीमेल साइंटिस्ट को एक अननोन मॉलिक्यूल मिला, और उसने ऑब्जर्व किया कि ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? वायरस के डीएनए को कट कर रहा है, और दैट वे इट इज डिसआर्मिंग द वायरस, दैट वे इट इज डिस्ट्रॉइंग द वायरस। समझ में आया? तो अब आपको प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन आ सकता है कि CRISPR-Cas9, which is used as a gene editing tool or as a molecular scissor to cut DNA, it is basically or originally it is part of bacteria's immune system. याद रहेगा, CRISPR-Cas9 is basically part of bacteria's immune system. Clear? याद रहेगा सभी को? तो फ्रॉम दिस स्लाइड यू नीड टू रिमेंबर दैट CRISPR-Cas9 इट इज पार्ट ऑफ बैक्टीरियाज एनिशियंट इम्यून सिस्टम which bacteria was using to disarm viruses by snipping off parts of their DNA, and we are going ahead. Okay, now this CRISPR-Cas9 tool already contributed to significant gains in crop resilience. Okay, अब क्रॉप रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि वी आर डेवलपिंग द क्रॉप्स विच आर रेजिस्टेंट टू ड्राउट, which are resistant to saline water, which are resistant to insect, which are resistant to pest. ये सारा रेजिस्टेंस डेवलप करने में हमें कौन हेल्प कर रहा है? ऑलरेडी CRISPR-Cas9 इज हेल्पिंग अस। कैसे हेल्प कर रहा है? बाय अल्टरिंग देयर जेनेटिक कोड टू बेटर विथस्टैंड ड्राउट एंड पेस्ट। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. So first benefit of CRISPR-Cas9, we are using CRISPR-Cas9 tool for genetic engineering in crops, and इससे हम क्या अचीव कर रहे हैं? We are achieving drought resistant plants or crops and pest resistant plants and crops. Good morning Satyavrata. Clear ये वाला point? Second, where else we are using CRISPR-Cas9? We are also using CRISPR-Cas9 to find out innovative cancer treatment. Can anybody tell me the name of immunotherapy that we discussed? Yeah, name of the live drug that is used in the treatment of cancer. Name of the live drug that is used in the treatment of cancer. Yes, please tell me. कौन सी लाइव ड्रग हम यूज करते हैं टू ट्रीट कैंसर पर्टिकुलरली? और अगर थोड़े डिटेल में जाए, मायोलोमा नाम का कैंसर है। हेलो, गुड मॉर्निंग सुजाता चौधरी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर। यस, इम्यूनोथेरेपी, इट इज पार्ट ऑफ जीन थेरेपी। याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड अंजू देवी एंड सुधा जुएल। सर मेंस में भी क्वेश्चन था एक, हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर। ये पॉइंट भी डाल सकते हैं आंसर में। यस, ऑब्वियसली यू शुड। देन फीमेल आर बायस्ड कंपेयर टू मेल्स। एग्जाम्पल, डॉक्टर कादम बिनी गांगुली, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया। शी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट जस्ट बिकॉज शी वॉज वुमन, बट स्टिल शी थ्राइव्ड। यस, वेरी गुड, इट इज कार्ड थेरेपी। अब कार्ड थेरेपी में अगर आपको याद होगा, हमने क्या किया है? इफ यू रिमेंबर व्हाट वी डिड इन कार्ड थेरेपी, we inserted the viral DNA
ओके हमने क्या किया पहले, चलिए मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। दिस इज वायरल डीएनए। हमने इस वायरल डीएनए में एक जीन इंसर्ट किया। फॉर दिस वी कैन यूज क्रिस्पर कैस9 टेक्निक। एक जीन इंसर्ट किया और अब ये जो मॉडिफाइड वायरल डीएनए, वी इंसर्टेड दिस डीएनए इनटू टी सेल्स विच आर आवर इम्यून सिस्टम सेल। इन टी सेल में जैसे ये वायरल डीएनए विथ जीन इंसर्ट किया, दीज टी सेल्स दे वेर किलिंग द कैंसर सेल। कैसे किल करती है दैट वी विल डिस्कस सम अदर डे, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो रिमेंबर, इनोवेटिव कैंसर ट्रीटमेंट में वी आर यूजिंग क्रिस्पर कैस9। ड्राउट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने में वी आर यूजिंग क्रिस्पर कैस9 एज वेल एज वी कैन यूज, right now we are not, but in future we can use CRISPR Cas9 technique to treat inherited diseases. Hereditary diseases can become curable or can be treated with the help of CRISPR Cas9 technique. Can anybody tell me one example of the treatment that we use to treat hereditary disease, जिसपे जिसपे आपकी यूपीएससी प्रीलिम 2020 में क्वेश्चन आया था और हमने वो डिस्कस किया था। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट ट्रीटमेंट दैट वी यूज टू ट्रीट हेरिडिटरी डिसीजेस, जल्दी से बता दीजिए। इस पे क्वेश्चन भी था। तो इस स्लाइड से हमें तीन चीजें पता चली। नंबर वन, क्रिस्पर कैस9 कैन बी यूज टू क्रिएट प्लांट्स विच आर ड्राउट रेजिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट। नंबर टू, CRISPR Cas9 technique can be used to treat for cancer treatment. Number three, CRISPR Cas9 technique can be used to treat or cure hereditary diseases. इसमें से इन दो जगह पे we are already using CRISPR Cas9. In third condition, we may use CRISPR Cas9 technique in future. We may use this technique. क्या हुआ भाई, यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैंने कब से आंसर पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। प्लीज यस, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है यार, बता दीजिए। जीन एडिटिंग, माइक्रोसोमल, नो। प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यस। माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी गाइस, we are treating a mitochondrial disease which is a hereditary disease with the help of 3-parent baby और माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी। और माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी दो तरीके से की जाती है, एक तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जिसपे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, या फिर आपको की जाती है ये मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर से, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर से, करेक्ट। सो दैट्स इट। तो ये क्लियर हो गया, तीन जगह पे क्रिस्पर कैस9 के एप्लीकेशंस मैंने बता दिए आपको। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, now this CRISPR Cas9 technique which was invented by these two female scientists, it was misused by rogue practitioners like He Jiankui, जो चाइना के एक यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है। उसने क्या किया, he used CRISPR Cas9 technique for first gene edited humans which is banned. Human genome editing, particularly germ line editing in human, to edit germ cells, germ line editing in human is not allowed, but that is done by this Chinese scientist by using CRISPR Cas9 technique. So this is the misuse of technology by humans. हमने हमेशा टेक्नोलॉजी का मिसयूज ही किया है। देखिए, डायनामाइट हमने इन्वेंट किया था टू मेक ब्रिजेस या बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए, बट वी स्टार्टेड यूजिंग डायनामाइट इन वॉर एज अ वेपन। देन न्यूक्लियर न्यूक्लियर या एटम के न्यूक्लियस का पावर हमने फाइंड आउट किया विच कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच विल बी पोल्यूशन फ्री, बट इंस्टेड वी आर यूजिंग दैट न्यूक्लियर पावर फॉर किलिंग ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। देन हमें फ्यूजन रिएक्शन के बारे में भी पता है, बट पहले हमने हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप किया, पहले हमने फ्यूजन रिएक्टर डेवलप नहीं किया। In the same way, CRISPR-Cas9 technique can be used for the treatment of hereditary diseases, cancer treatment, and in genetic engineering in plants. But instead, the scientists use this CRISPR-Cas9 technique for human genome editing in the babies, which is a very problematic issue. क्योंकि अगर इस तरह से हम ह्यूमन जीनोम का एडिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो दैट कैन लीड टू डिजाइनर बेबीज। सबको एक ही टाइप की बेबी चाहिए, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। डाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज और एनी रेस। अगर हमारे ह्यूमन में भी अगर मोनोकल्चर हो जाए ना, अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम।
ओके इसलिए डिजाइनर बेबीज आर अ वेरी बिग इशू एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्रिस्पर Cas9 टेक्निक. सो ये मेन डिसएडवांटेज है क्रिस्पर Cas9 टेक्निक का, दैट CRISPR-Cas9 technique can be used for gene editing or germline editing in humans, and that can lead to the designer babies. Okay, now I am going to explain you what is the meaning of palindrome. Can anybody tell me the spelling of Malayalam? What is the spelling of Malayalam? सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ मलयालम. देखिए MALAYALAM. अब मैं इसे उल्टा पढ़ता हूँ. MALAYALAM मलयालम. आप कैसे भी पढ़ो ये सेम है. इसे कहते हैं पैलिंड्रोम. दिस इज such words are known as palindromes in English grammar. अब इसी तरह से देखिए TTAGCAC ये पैलिंड्रोम हो गए. देखिए TTAGCAC GTGCTAA TTAGCAC GTGCTAA पैलिंड्रोम हो गया. तो इन्हें कहा जाता है पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. इन्हें क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. और जब हम जीनोम एडिटिंग करते हैं या जीन एडिटिंग करते हैं, वेदर विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और विद द हेल्प ऑफ CRISPR-Cas9 टेक्निक, डीएनए को कहाँ कट किया जाता है? तो डीएनए इज कट एट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. जहां पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होंगे वहां पे डीएनए को कट किया जाता है. ठीक है, चलिए आगे. सो दिस इज पैलिंड्रोम. GAATTC GAATTC. दिस इज अ पैलिंड्रोम रिपीट. अब देखिए आपके क्रिस्पर का लॉन्ग फॉर्म दिया गया है यहाँ पे. ओके, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ क्रिस्पर. C फॉर क्लस्टर्ड. एक्चुअली इट इज क्लस्टर्ड. R for regularly, I for interspaced, S for short, P for palindrome, and R for repeat. Yes, radar is an example of palindrome. Very good, Soumi. Correct. Okay, CRISPR में क्या है? आपके palindrome repeats आते हैं. CRISPR में क्या आते हैं? Palindrome repeat आते हैं. That's why you should know the meaning of palindrome. जरूरी था आपको पता रहना. So this is the long form of CRISPR. What are the functions of CRISPR? Or clustered regularly interspaced palindromic repeats. And जब हम ये कहते हैं, ये लॉन्ग फॉर्म हो गया आपका CRISPR का, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट CRISPR-Cas9, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट CRISPR-Cas9. C for CRISPR, A for associated or AS. So CAS. So CRISPR associated 9 protein. So this is CRISPR-Cas9 technique. Okay, this is CRISPR-Cas9 technique. Clear? So CRISPR and CRISPR-Cas genes are essential in adaptive immunity in select bacteria. I already told you CRISPR and CRISPR-Cas9, these were part of the ancient immune system of bacteria. Here again one more minute detail related to CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 is, though it is part of the ancient immune system of bacteria, but it is part of the adaptive immunity. Very important. It is part of the adaptive immunity of select bacteria and archaea. Archaea मतलब ancient bacteria, enabling the organism to respond to and eliminate invading genetic material. Invading genetic material का मतलब होता है वायरस, because virus is simply a genetic material. Single stranded RNA और double stranded RNA, the single stranded DNA और double stranded DNA, इतना ही होता है वायरस मतलब. And bacteria, it is a prokaryotic cell. So when the invading genetic material, that is virus, enters into the bacterial cell, this CRISPR or CRISPR-Cas gene will destroy the invading genetic material by cutting it at palindromic repeats places. तो इससे क्या होता है? वो वायरस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये बैक्टीरिया सेव होता है. और यही से हमने लर्न किया कितने इजीली और कितने सरलता से हम हमारे डीएनए को एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पे कट कर सकते हैं. इट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. द biggest benefit of CRISPR-Cas9 are, number one, it is very simple, it is very accurate,
एंड इट इज वेरी वेरी प्रिसाइज। ये 3 बहुत बड़े बेनिफिट है आपकी क्रिस्पर Cas9 की जीनोम एडिटिंग में या जीन एडिटिंग में, ठीक है, क्लियर। सो हो गया। अब और एक पॉइंट याद रहेगा, ये दो इट इज पार्ट ऑफ एनिशिएंट इम्यून सिस्टम, इट इज पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। Many of students attended this CRISPR-Cas9 technique lecture before also, but I hope कि आपको बहुत सारे नए पॉइंट पता चल रहे हैं या आप भूल गए थे, अब आपका रिवीजन भी हो गया। एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है बैक्टीरिया की, हाँ, ओके। These repeats were initially discovered in 1980s in E. coli, ये मैंने आपको बताया था। Is that the reason why archaea survive in extreme situation? No, Rudrani Singh. This adaptive immunity is useful to deal with the invading viruses. When it comes to extreme situation, archaea can survive extreme situation because of the cell wall. Archaea जो बैक्टीरिया है ना, these bacteria have cell wall and these cell wall protect them from extreme temperature, protect them from acid, protect them from the extreme salinity. इन सबसे उनकी सेल वॉल उनको प्रोटेक्ट करती है, नॉट दिस वन। ओके, क्लियर। सो इनिशियली सबसे पहले ये रिपीट्स कहाँ हमें मिले थे? ई कोलाई बैक्टीरिया में। देन उनका फंक्शन कंफर्म हुआ 2007 में, ठीक है, और वो किस में कंफर्म हुआ? यस, थर्मोफिलस नाम का बैक्टीरिया। अगेन थर्मोफिलस मतलब ये आपका आर्की बैक्टीरिया है, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, फिलस मतलब अट्रैक्टेड। अ बैक्टीरिया विच इज अट्रैक्टेड टू द हायर टेम्परेचर, इस बैक्टीरिया में भी आपको CRISPR-Cas9 मिलेगा। इस बैक्टीरिया के थ्रू हमें एग्जैक्ट पता चला कि CRISPR-Cas9 कैसे काम करता है एंड हाउ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस कैन एक्वायर रेजिस्टेंस against a bacteriophage by integrating a genome fragment of an infectious virus into its CRISPR loci. ओके, अब CRISPR किस तरह से काम करता है, इसकी जो पैथोलॉजी है ना, ये बताना एक अलग स्टोरी है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू सम अदर डे। अभी आपको सिर्फ CRISPR-Cas9 को समझना है। ओके, 3 टाइप्स ऑफ CRISPR mechanism have been identified, which type 2 is the most studied, not important for us. Okay, it is not important for us, ठीक है। ये cRDNA और cRNA और CRISPR RNA मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्विजिशन, cRNA बायोजेनेसिस एंड इंटरफेरेंस। फॉरेन डीएनए को इस तरह से क्या किया जाता है? कट किया। देखिए, दिस इज द फॉरेन डीएनए और इसको यहाँ पे Cas9 प्रोटीन और CRISPR ने कट कर दिया। ये CRISPR टेक्निक है, या CRISPR-Cas9 टेक्निक है। ओके, क्लियर। सो दिस इज अबाउट CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग टूल दैट इज क्रिएटिंग अ बज़ इन द साइंस वर्ल्ड। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया CRISPR-Cas9 इट इज द सिंपलेस्ट, मोस्ट वर्सटाइल, प्रिसाइज मेथड ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। नेक्स्ट, इसमें एंजाइम जो है, Cas9 इज अ प्रोटीन और एंजाइम, Cas9 इज अ प्रोटीन और एंजाइम। ओके, clear? Then this enzyme or this protein act as a molecular scissor that can cut the DNA and it can add or remove. Okay, DNA को कट करने का काम CRISPR-Cas9 में कौन करता है? Cas9 करता है। एंड अच्छा, इसमें ओके फाइन, लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। CRISPR-Cas9 में 2 कंपोनेंट होते हैं। दिस CRISPR-Cas9 has 2 components. One is guide RNA. This guide RNA decides कि which part of the DNA should be removed or cut, and another is Cas9 protein. So Cas9 protein, it is responsible for cutting DNA, and guide RNA is responsible for identifying the part of the DNA that should be cut. ठीक है, so Cas9 enzyme, RNA और guide RNA, इसमें इस इमेज में आप देख सकते हो RNA and Cas9, RNA and Cas9, और ये हो गया क्लीवेज डीएनए में। फॉरेन डीएनए में क्या हो गया? क्लीवेज हो गया। फॉरेन डीएनए को क्या किया? कट किया Cas9 ने, लेकिन आइडेंटिफाई किसने किया? RNA ने। किसने किया? RNA ने। इसलिए RNA को हम क्या कहते हैं? गाइड RNA। ओके, सो दिस इज अबाउट द CRISPR-Cas9। ओके, फाइन। The cell recognizes that DNA is damaged and tries to repair it. अब क्या किया आपने? यहाँ आप देख लीजिए टारगेट सीक्वेंस में गाइड RNA आया,
गाइड आरएनए के आने के बाद Cas9 प्रोटीन आया, Cas9 प्रोटीन ने डीएनए को कट किया। अब ये जो कट डीएनए ना, सेल की नेचुरल टेंडेंसी होती है, जब भी डीएनए डैमेज हो जाता है ना, तो सेल की नेचुरल टेंडेंसी होती है टू रिपेयर दैट डीएनए, डैमेज डीएनए को रिपेयर करना। उसी टाइम हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस द डिजायर्ड जीन। अब ये डिजायर्ड जीन क्या होता है, while repairing that DNA, this desired gene will be incorporated into this DNA by the cell। इसको हम कह दिए होगा आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन और इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन विद द हेल्प ऑफ CRISPR-Cas9 टेक्निक। ओके, क्लियर। और भी अलग अलग टेक्निक है, जैसे वी कैन यूज केमिकल्स टू मेक चेंजेस इन द डीएनए, वी कैन यूज रेडिएशंस टू मेक चेंजेस इन द डीएनए, वी कैन यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू मेक चेंजेस इन द डीएनए, एज वेल एज वी कैन यूज CRISPR-Cas9 टेक्निक टू मेक चेंजेस इन द डीएनए। ये सारी टेक्निक हम यूज करते हैं डीएनए में चेंजेस करने के लिए, या इनको कहा जाता है जीन टारगेटिंग टेक्निक्स। ठीक है। अब जैसे आपका वेदर यू आर यूजिंग केमिकल्स, वेदर यू आर यूजिंग रेडिएशंस, और इवन यू आर यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, these are they take long time to create a mutation and they are fairly expensive, plus desired mutation इंट्रोड्यूस होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है इन सब में, एटलीस्ट इन दोनों में डिजायर्ड म्यूटेशन इंट्रोड्यूस होने की कोई भी गारंटी नहीं है। दैट इज नॉट द केस विद CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 इज क्विक, CRISPR-Cas9 is simple, CRISPR-Cas9 is accurate, and CRISPR-Cas9 is precise. Okay, clear? Then there are many other, जैसे TALEN. TALEN is a gene editing tool or technique. ZFN is a gene editing tool or technique. CRISPR-Cas9 is a gene editing tool or technique. CRISPR-Cas9 के बाद ये टैलिन और ZFN डेवलप हुए और ये बेटर देन CRISPR-Cas9 है। आपको प्रीलिम में बस इतना याद रखना है, टैलिन एंड ZFN। टैलिन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, एंड ZFN जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस। तो ऑल these two techniques they are developed way after CRISPR-Cas9 and they are very better, they are better than, side effects भी नहीं like radiation, yes side effects भी नहीं है रुद्रानी, correct, so they are better than the CRISPR-Cas9 technique। Okay, fine, it is again CRISPR-Cas9 is fastest, cheapest and most reliable system for editing genes or for gene editing। Okay, so CRISPR-Cas9 somatic gene editing can be done but germline gene editing is not allowed। देखिए somatic cell में आप कर सकते हो, germline cell में नहीं कर सकते in case of humans। ठीक है, ओके, याद रखिए सोमैटिक सेल। देखिए यूज ऑफ CRISPR-Cas9 and other gene editing technologies in somatic cells is uncontroversial, but their use in germ cells is controversial or it is banned, not allowed। That's it। अब आपको अगर कोई डाउट है CRISPR-Cas9 टेक्निक में, देखिए आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। What we discussed about the carnivorous plants, okay, then we also discussed about the CRISPR-Cas9 technique which is a very important tool in case of biotechnology। ये दो पॉइंट आज हमने डिस्कस किए करंट अफेयर्स में, इसमें से ये रिवीजन था और ये हमने completely new topic स्टडी किया। as I promised you even for 2021 मैं आपका साइंस टेक्नोलॉजी इतना परफेक्ट कर दूंगा कि कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दीजिए साइंस टेक का, you can easily and comfortably answer that question whether it is in preliminary examination or it is in mains examination। That is my word। Okay guys, if you have any doubt you can ask, till that time let me finish my routine। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। सर CRISPR-Cas9 पे कोई और लेक्चर भी होगा क्या? तनुजा, वी कैन डू दैट। आई कैन डू वन थिंग, आई कैन टेक अ स्पेशल लेक्चर ऑन CRISPR-Cas9 ऑन Unacademy। लेट मी सी हाउ एंड व्हेन वी कैन डू दैट, ताकि आपको CRISPR-Cas9 टेक्निक एकदम प्रॉपर और डिटेल्ड वे में समझ में आए। विल डू दैट, डोंट वरी। Unacademy पे इसी वीक में हम एक आध दिन में वो लेक्चर कर लेंगे CRISPR-Cas9 का। ठीक है तनुजा? Okay, this is my telegram channel, please subscribe to this telegram channel which is free, then follow me on Unacademy, again it is free, and dedicate your hats to me on Unacademy, that is also free।
Okay, and when you use this code SKUS code for 10% discount on Unacademy, though using SKUS code is not free, but it will definitely give you 10% discount on Unacademy subscription, whether you are going for plus subscription or you are going for iconic subscription, या फिर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में अगर किसी को नीट का सब्सक्रिप्शन लेना है, IIT का लेना है, जेईई का लेना है, किसी भी सब एग्जाम का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो यू कैन यूज दिस कोड और यू शुड यूज दिस कोड SKUS for 10% डिस्काउंट ऑन Unacademy सब्सक्रिप्शन। अब कल के टाइम टेबल के बारे में सुन लीजिए। टुमारो 8 AM देयर विल बी अ टेस्ट on Unacademy. This will be a live test on science and technology. Okay, 8 AM Unacademy learning app पे होगी ये टेस्ट। सेकेंड सेशन हमारा होगा कल 11:15 AM को, and this session will be on YouTube, and this 11:15 AM session will be based on the current affairs of science, technology, environment and ecology and geography mapping. So that's it for the day, guys. Thank you very much. Thank you, Anupam. Welcome to everybody, those who said thanks to me, and I thank you for attending my sessions. So that's it, guys. Thank you very much. Bye bye, take care, and sayonara. We are meeting tomorrow at 8 AM on Unacademy Learning app with a beautiful test on science and technology, few questions of geography mapping, and नहीं इंद्रजीत यादव, that 1:30 PM जो सेशन था ना, that was a rise crash course, that was only for 2020 prelims, तो वो खत्म हो गया अभी। ठीक है, चलिए बाय बाय, सायन।